Yes, sir. Okay. So, okay. So this is your English class. I'll be taking your English class, right? So what do you have to? There are few things I mentioned first. कुछ चीजें हैं जो आपको क्लास में फॉलो करना है. मतलब अगर मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ तो आप जवाब दे सकते हैं. इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड देन यू कैन स्पीक अप, राइट? It's a you think like it's a class. You have question, you should answer it. If I have a question, I'll ask you. You should answer it, right? अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आपको सवाल करना है, और अगर मैं सवाल कर रहा हूँ तो आपको जवाब भी देना है, राइट? ठीक है, इतना चीज फॉलो करना है एटलीस्ट, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट. अगर मुझे ये पता चलना चाहिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो जानने के लिए मुझे ये जानना जरूरी है, आपके आंसर सुनना जरूरी है, राइट? यस और नो? Yes, sir. यस. ओके. एंड सी हु विल बी इन्वॉल्व इन द क्लास. जो बच्चे क्लास में इन्वॉल्व होंगे तो वही है जो कि मतलब मैं क्या बोलूँ, उनको बेस्ट बेनिफिट होगा और वो सीख पाएंगे, राइट? अगर आप पैसिवली फोन क्लास ज्वाइन करके फोन यूज करते रहेंगे देन इट विल बी नो यूज, राइट? आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं भी समझ में आएगा, ऐसा हो सकता है. ठीक है, इज इट फाइन? सो बेटर टू बी हियर इन द क्लास. ओके. Is that okay? Yes, sir. Okay. Okay. Am I audible to every one of you? Please do tell me. And maybe I'll also, I might be visible as well. Okay. Yes or no? Okay. So start our class. ओके. आज की जो क्लास है वो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आप बहुत बचपन से, मे बी अगर आप एक सीबीएसई स्कूल से पढ़े होंगे तो क्लास 3, 4, 5 से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन. हमें हमेशा व्हाटएवर एग्जाम वी अपीयर इन वी हैव टू सॉल्व दैट पर्टिकुलरली, राइट? हम लोग को एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन दिया होता है, उस पैसेज को पढ़ते हैं और फिर हम लोग उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट? सबने दिया होगा अपने स्कूल्स में, राइट? Yes or no? Correct? So can someone tell me why do we need to solve passage? ये पैसेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों रीडिंग कम्प्रीहेंशन हमें सॉल्व करना होता है हर एक एग्जाम के लिए? मे बी एसएससी हो, टीचिंग एग्जाम हो, केवीएस हो, एनवीएस हो और सीटेट हो, या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, कोई भी जनरल एग्जाम में आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन पूछा ही जाता है. Why this is required? Come on, tell me. Why this is required? Okay, can everyone see my screen? No? Am I audible? Yes, sir. तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन हमें पढ़ना क्यों जरूरी है? एटलीस्ट जो भी आंसर्स आपको पता है वो पता है, एग्जाम निकालने के लिए, एग्जाम्स में पूछा जाता है इसलिए. Understanding ability. ओके, थैंक यू नेहा. शी इज सेइंग टू अंडरस्टैंड द vocabulary or what? Akash is saying to improve the understanding skill. Okay, I'll be giving an answer, but I want you to I want to hear from you. कि आपको जो भी लगता है, जो भी जेन्युइनली आपको लगता है कि हाँ पैसेज क्यों दिया जाता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं आता. पढ़ना, ये चेक किया जा रहा है कि आपको पढ़ना आता है कि नहीं आता इंग्लिश, ऐसा है क्या? व्हाट डू यू थिंक? For checking understanding ability. टू check your understanding ability, right? Okay. For critical thinking And also to problem read, solving. Okay, critical thinking, very good. Archita. Harshika is saying also. sir, to read, to understand our reading ability. Okay, to understand your reading ability. Okay. Anyone else? Problem solving skills. Problem solving skill. Okay. All these are I would say these are all are the points which are true. ये सारे points सही हैं कि हमें problem solving skills है, creative skills है, reading ability है. But see, practically अगर हम लोग like if you want to just look at it practically, तो हमें क्या होता है कि जब भी आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या कॉर्पोरेट हो, एनीवेयर इफ यू आर वर्किंग, अगर आपको कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, यू गेट मेल्स, राइट?
अब मेल में कोई भी कम्युनिकेशन होता है ओवर द मेल होता है, यस और नो? ओवर द मेल होता है। और जब भी आप अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो नॉर्मली क्या होता है, आप देखेंगे एक लेटर इशू किया जाता है या लेटर पास किया जाता है, लेट्स से राइट। फॉर एग्जांपल अगर आज प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक रूल बनाया, राइट, तो क्या होता है, एक रूल रिटन रूल होता है, उस रूल को हम क्या होता है सेक्रेटरीट के पास दिया जाता है, एंड देन सेक्रेटरीट जस्ट पास इट टू ऑल द लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज, मे बी डीएम, यस और नो, और डीसी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ऐसा होता है प्रोसीजर, एटलीस्ट यू नो दैट, इतना तो पता है सबको। अब वो क्या होता है कि Yes, रिटन sir. को पास किया जाता है। अब हो सकता है कि अलग अलग लोग उस लेटर को पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसको समझते हैं और अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, यस और नो, करेक्ट। अब क्या है कि उस रीडिंग एबिलिटी अगर आपके पास होगी तो उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, यस और नो। अगर आपके पास वो एबिलिटी नहीं होगी तो आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और आपको हो सकता है कि कुछ और इम्प्लीमेंट करने दिया जाए, आप उसको अलग तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, राइट। तो प्रैक्टिकली ये हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये यूजफुल है, यस और नो, कि आप जो चीजें कम्युनिकेट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन आर नाउअडेज इन रिटन फॉर्म, यस और नो, इन ब्लैक एंड व्हाइट, यस। तो अभी क्या होता है कि ये चीजें कम्युनिकेशन के लिए होता है कि कोई भी लेटर आया आप उसको पढ़ना है और उसको समझना है, तो उन सारे चीजों को टेस्ट करने के लिए आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जो हम लोग वी डू इट फ्रॉम सिंस आवर चाइल्डहुड, हम लोग छोटे जब होते हैं तब से स्कूल टाइम से ये प्रैक्टिस होता है। जब आप 10th के एग्जाम दिए होंगे, जब आप 12th के एग्जाम दिए होंगे, तब भी आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन दिया गया होगा सॉल्व करने के लिए, करेक्ट, यस सुनो। सो दिस इज वेरी मच Yes, sir. टेस्ट योर एबिलिटी, राइट, कि आप उसको पढ़ के समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर ये आपका ठीक है, देन यू कैन वर्क इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मे इट बी प्राइवेट और मे इट बी गवर्नमेंट, राइट, so that you can understand something, not only to work, so it will test your ability कि आप चीज़ों को प्रॉपरली इन्फर कर सकते हैं, जो दिया गया है उसको आप कंप्रीहेंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए दिया जाता है, राइट। सो रीडिंग कंप्रीहेंशन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीटेट एग्जाम, राइट। आप देखेंगे उसमें 10-12 क्वेश्चंस जो होते हैं आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन से होते हैं। इफ यू नो इट सॉल्विंग टू सॉल्व प्रॉपरली, एटलीस्ट 8 मार्क्स इज पक्का, you can score 8 marks for sure, 8 to 9 marks, right? You will get two, one will be reading comprehension, another will be part of a poetry. There will be a poem and you have to solve according to, you have to solve question based on that poem, and one will be reading comprehension. There will be some drama or something will be written, maybe some factual information as well. So you have to read it, then you have to solve the question. Is that okay? This much is fine for every one of you? Any confusion or question till here? Yes or no? If you don't have question, say it. If you have a question, you can do let me know. कोई question है और नहीं? So now we'll see what are the tips and what are the points then to solve a reading comprehension, right? So what happens, like see, tips to solve a passage. Okay, so what happens when you are in the exam hall, you start reading a passage, आप एक पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं और फिर क्या होता है, एक लाइन पढ़ने के बाद, 2 लाइन पढ़ने के बाद कहीं और आप खो जाते हैं, उसके फर्स्ट लाइन की कुछ आइडिया मिल गया, यू गॉट द आइडिया, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ समथिंग, आप कुछ और चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं, राइट। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, जब आप एग्जाम हॉल में हैं, यू हैव टू बी फोकस्ड वाइल रीडिंग। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा ध्यान अपना पैसेज पे लगाना है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते पढ़ते, इफ इट्स पैसेज इज अबाउट मून, सडनली यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मून एंड सन एंड अदर planets, okay, then it will be disturbing and it you will waste your time, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे अगर दूसरी चीजों को सोचेंगे तो, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि आपको यू हैव टू बी फोकस्ड व्हाइल रीडिंग, ट्राई एंड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द पैसेज। आप इसकी बजाय लाइक हर एक वर्ड के मीनिंग को समझने से बेटर है यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द पैसेज। ऐसा हो सकता है कि आप पैसेज पढ़ रहे हैं एग्जाम हॉल में एंड यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ फ्यू वर्ड्स, हो सकता है कुछ वर्ड्स के मीनिंग आपको ना पता हो, बट आपको क्या करना है, उस सारे पैसेज का जो एक मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। यू हैव टू ट्राई अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग और द पर्पस ऑफ द पैसेज, ये पैसेज क्यों है, इसका मीनिंग क्या है, क्यों लिखा गया, राइट, वो समझना है। हो सकता है कुछ वर्ड्स के मीनिंग यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स, बट दो यू कैन अंडरस्टैंड द
पर्पस ऑफ द पैसेज और द इंटायर मीनिंग। हो सकता है कुछ मीनिंग्स वर्ड्स के पता ना हो, बट पूरे पैसेज का मीनिंग आपको पता चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्रॉ द माइंड मैप ऑफ द पैसेज। जैसे जैसे आप पैराग्राफ पढ़ते जाते हैं, आपको यू हैव टू ड्रॉ अ माइंड मैप, व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ, व्हाट इज देयर इन द सेकंड पैराग्राफ। आपको एक माइंड मैप सोच सकते हैं, यस और नो, कि आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा, देन यू गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, देन व्हाट इज देयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ यू कैन कीप इन योर माइंड, देन while going to the second paragraph you just keep in your mind, then when you are reading the third paragraph you can just draw a mind map what all the things has been mentioned in the passage. Okay, आप एक बार दिमाग में उसका एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, रीड द फर्स्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ for the main concept. Most of the time they will tell you the main concept in the passage from the first paragraph or the last paragraph. फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ से आपको मेन कंसेप्ट पता चल जाएगा पैराग्राफ का, ठीक है, वो पैसेज का। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द पैसेज। ओके, आप ये फिक्शनल है या मे बी कमेंट है या समथिंग sarcastically said or there is some suggestions or maybe some innovation or maybe some factual information, वो आपको समझना है। देन ट्राई टू लोकेट द आइडिया अबाउट द ऑथर। ऑथर किस तरीके से वो बोल रहा है, कोई सजेशन है या क्रिटिसिज्म है या अप्रिसिएशन है। ओके, ओके एवरीवन, कैन यू सी माय स्क्रीन? नो, एटलीस्ट से yes or no. Yes, sir. Yes. It's visible. Yes, Okay. sir. Yes. Okay, Megha, if it's not visible for you you can disconnect and then reconnect. Okay, it will, maybe it will solve your problem. Okay, so try to locate the idea about the author जो पैराग्राफ लिखे हैं पैसेज, you have to locate the idea what exactly the author trying to tell you. Okay, and what is the next point? Title of the passage should not be too vague or too specific. Okay, so if a passage is, let's say, talking about something, okay, then the passage should not be, if it's asking about the topic should not be too vague। मतलब आपको जो टॉपिक दिया है उसे बहुत दूर कोई चीज के बारे में नहीं लिखना है, और अगर ऐसा भी ना हो कि बहुत प्रिसाइज नहीं होना चाहिए, राइट, बहुत प्रिसाइज इन द सेंस कि अगर लेट्स से इस पैराग्राफ में आपको बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा गया तो आपको किसी एक टॉपिक के बारे में नहीं उठाना है। ठीक है, ये हो सकता है और भी चीजें हो, जो भी हो, मतलब उसको समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, let's say if a passage is talking about इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हो सकता है अलग अलग स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, या सुनो, तो अब क्या करना है कि ऐसा नहीं कि बहुत प्रिसाइजली किसी स्टेट का नाम लिख सकते हैं, लिख दें आप, या फिर बहुत ऐसा नहीं एशिया कंटिनेंट और वर्ल्ड के बारे में बात करें। आपको देखना है कि पैसेज में क्या एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन दिया गया है। समझ पा रहे एग्जाम्पल? यस, तो आपको बहुत प्रिसाइज, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम किसी एक छोटे टॉपिक को उठा के पैराग्राफ का टॉपिक बना दे रहे हैं, या फिर कुछ बहुत ही ऐसा जो पैराग्राफ से रिलेटेड ना हो ऐसा टॉपिक बना रहे हैं उसको। ठीक है, टाइटल शुड थ्रो लाइट ऑन कोर कंटेंट। जो टाइटल आप दे रहे हैं वो जो पैराग्राफ के कोर कंटेंट पे के बारे में आइडिया दे। ठीक है, जो भी आप टॉपिक पढ़े उसको देख के ये समझ में आए कि पैराग्राफ का क्या आइडिया है, अगर ये आपको टॉपिक चूज करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑथर। ऑथर क्या पर्सपेक्टिव देना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देन there may be some indirect question, read between the lines in the sense कि whatever the lines they have mentioned in the passage, उसके directly जो lines है उसके अलावा भी कुछ चीजों को वो mention करते हैं, उसको समझना होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स सीटेट के एग्जाम्स में देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि जो पैसेज में मेंशन है उसके बारे में ही क्वेश्चन होता है, तो आप बहुत ध्यान से अगर पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। राइट, इज इट फाइन फॉर एवरी वन ऑफ यू? ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग 2-3 पॉइंट्स बस इतना देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको फास्ट पढ़ सकते हैं, एंड देन विल ट्राई सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चन। ओके, तो आप टू रीड फास्ट, आपको जब थोड़ा स्पीड से या जल्दी कम टाइम में पैराग्राफ पढ़ना हो तो व्हाट यू हैव टू डू, अवॉइड लिप रीडिंग। कई लोगों का आदत होता है, कई बार आप एग्जाम में जाएंगे तो आपके पड़ोस बगल में कोई बैठा या बैठी है, वो क्या करते हैं, आपको पढ़ रहे हो तो वो भी थोड़ा जोर जोर से मरमरिंग साउंड में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपको डिस्टर्ब होता है, आपका सारा ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा कि अरे क्या पढ़ रहे, क्यों शोर कर रहे हो, एग्जाम चल रहा है, राइट। देन इट विल डिस्टर्ब अदर्स ऑल्सो, और आप खुद भी उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा अगर आप खुद वैसा कर रहे हैं तो आपका टाइम उसमें वेस्ट होता है। ठीक है, सो यू शुड अवॉइड लिप रीडिंग, आपको माइंड में पढ़ना है। ठीक है, जो भी सेंटेंस है उसको आपको माइंड में पढ़ना है। ओके, then avoid repetition. What happens most of the time,
No, normally it no, most of you have faced it or even I have faced it कि आप कई बार ऐसा होता है बुक उठाते हैं आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं पढ़ते पढ़ते लाइक फर्स्ट पेज यू रेड देन सेकंड थर्ड एंड सडनली यू सॉ देखिए आप सेवंथ पेज में आ गए बट आपके बाकी पेजेस के बारे में क्या है वो आपको भूल गए आप लाइक आपको याद नहीं है देन यू अगेन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम फर्स्ट पेज राइट ऐसा हुआ है कई कई लोगों के साथ हुआ होगा ऐसा होता है राइट तो ये क्या होता है कि आपको ध्यान उस टाइम फोकस नहीं रखने से ये ऐसा हो जाता है तो अब जब पैराग्राफ भी पढ़ेंगे तो क्या होगा कि एक लाइन पढ़ा आपने दूसरा लाइन पढ़ा जब तीसरा लाइन पढ़ना है तो आप हो सकता है कई बार आप सेकंड लाइन ही पढ़ लेंगे तो उस टाइम आपको टाइम बचाने के लिए यू शुड नॉट रीड द सेम लाइन अगेन सो यू हैव टू अवॉइड रिपीटेशन आपको रिपीटेडली सेम लाइन को नहीं पढ़ना है ठीक है Then read the passage carefully. Try to understand what the author is emphasizing upon, and main points resembles the opinion rather than background or effect. जो क्या होता है कई बार पैसेज पढ़ते हैं हम लोग तो मेन आइडिया जो है उसके बारे पे ध्यान देना है ऐसा नहीं है कि बस कोई फैक्ट्स है या सब फैक्ट है उसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे तो जो मेन आइडिया वो क्या हो सकता है बिगिनिंग में भी हो सकता है पैसेज के मिडिल में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है ठीक है दिस इज ऑल अबाउट थियोरेटिकल पार्ट पैसेज को सॉल्व करने के लिए एंड लेट मी टेल यू देयर इज नो निंजा टेक्निक राइट यू हैव टू प्रैक्टिस सॉल्विंग द पैराग्राफ एंड देन ओनली इट विल हेल्प यू आउट ठीक है जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे वो आपको हेल्प करेगा ऐसा नहीं है कि मैं कोई नॉर्मली व्हाट हैपेंस इन यूट्यूब दे विल टेल यू यू कैन सॉल्व पैसेज इन 2 minutes or 5 minutes or 10 minutes just tell me honestly I'm saying there is no such shortcut trick I have and I won't be telling you any ninja technique right so the very basic thing is these things you have to take care and then we can solve the passage right you have to work and you have to devote your time to master it is that fine so theory part of it to solve a passage is fine. Now we can start practicing the question. So this much is fine everyone. Any question till here? Like आपको अगर लगता है कि सर मुझे पैसेज जब मैं करता हूँ सॉल्व तो मुझे ये दिक्कत आती है या मुझे ये परेशानी होती है या मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम होता है you can ask me or we can start solving a paragraph. Come on, Archita, are you getting the point? Harshika, Akash? Yes, sir. Yes, Is it sir. for every one of you? Sir, I have one doubt. Yes, tell me. So, like in the passage when they give, like if they ask us to find a meaning. Mm-hmm. Okay, are you sharing like some if screen? they ask us to find a meaning of a particular no sir Okay. like Okay. if they ask us to find a meaning of some word Mhm. if we don't know the meaning of that particular word what can we do? Yes, very good question. So let's say if it's asking for a meaning of a word, then you have to just go to find that particular word in the passage. सबसे पहली बात है कि आपको उस word को passage में ढूंढना है, where that is written in the passage, right? And then you have to read the entire line, and then you have to make meaning of it, right? So you have to try to understand the meaning of that particular word from the paragraph, or maybe one line above and one line down. And if you read the 2 3 lines and then you will understand the meaning of it right that will come with the practice we'll do few homework as well along with the practice okay so there is no sort something like I can give you a equation or a formula that you will apply and you will get meaning so what you have to do you have to read the entire line or maybe 2 line 3 line and then you have to understand the meaning of that particular word maybe directly you don't know the meaning of it right but at least by reading the line the entire line you can understand at least the essence of the word and then you can find it from the options those 4 options is that okay Harshika Yes sir. okay any other question from any one of you see I'll let me tell you you should make yourself comfortable in the class you should be very comfortable asking in the question like everyone is in the same level right everyone is here to learn right should not think like okay if I'll ask a question what others will think yes or no but ask a question maybe your question will help others to clear the doubt right maybe ऐसा हो सकता है अभी हर्षिका ने जो सवाल पूछा कई लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कॉमन क्वेश्चन हो yes or no but आप नहीं पूछ रहे हैं she asked the question and maybe you got the answer yes or no ऐसा होता है कई बार so I'm not asking to
say the question right now. Whenever you have a question, you should ask it. Okay. So what we'll do, we'll solve a paragraph right now. Okay. Should we start? Okay. Let me share my screen. Okay, so I'll display a passage on the screen. Should I read it for you, or you will read the paragraph and you will try solving it? What will be the option? You suggest what I should do. Should I read it for you, or you by yourself read the paragraph and then I'll display the question and then you can answer it? Tell me. No option. So we can do it. So what you should do? Can you see the paragraph and the passage on the screen? Can you see it? Yes, sir. Okay, if you can see it, read the passage. Then I'll display the question one by one, and then we can solve the passage, and we can also discuss the question, each question. So your time starts. You can read the passage now, and then we'll solve the question. It's a very simple passage. Try solving it. Read it, and then I'll show you the questions. The only thing, like, no, to master anything, you have to practice. Okay. Okay, I'm sorry, just got disconnected. Okay, can you see my screen now? Okay, so once you are done with the reading, you can just tell me, or you can uh, comment in the chat box so that we can start solving the questions.
If you're done reading, you can give a thumbs up. Should we start with the questions? Okay, shall we start with the questions now? Yes, sir. Okay, sure. Okay, we'll be solving the question one by one. So the first question you have, see the question. The king's bodyguard did so. Which of the following correctly explains did so? Which of the following explains did so? Which is the right option? A, B, C, D, E. You can type out your choice. Okay, so who all have joined right now? We are discussing about reading comprehension. We already gone through how to solve the reading comprehension, and right now we are practicing a passage, and I have displayed the passage here along with the question, the first question. So if you can read the passage and try solving the first question. So who all have completed reading, you can tell the answer. Okay, the first question is here. You can tell me the option, which is the correct option. So the first question is the king's bodyguard did so. Which of the following correctly explains did so? तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो किंग्स के बॉडीगार्ड थे उन्होंने ऐसा किया. तो जो 5 ऑप्शन है उसमें से डिड सो मैंने ऐसा किया, वो ऐसा क्या है? ओके ओके, शुड आई एक्सप्लेन द पैसेज इन हिंदी और व्हाट यू वांट मी टू डू? शुड आई एक्सप्लेन इट लाइन बाय लाइन? Okay, see, in other classes I do give the option passage and then we try to solve it, right? I never translate the passage in Hindi. If you want me to translate, I can do that. But the thing is, you have to tell me whether I should go for it or not. Should I translate it in Hindi, or you can? No, sir. No, you can directly solve the passage. Yes, sir. Okay. So, what will be the correct option? First one. Okay. I only got one answer. Given okay, 2 answers: Harshika, Sumitas, Prachi. 3 answers now: Subarna, Akash. Okay. Uh, okay. See, do you know about Akbar? Do you know about Akbar? In more every class, I do tell this story. Akbar was not he became king in 13th year of age. You know that? At least you know that. Akbar became the king when he was 13 years of age, right? You know that. Okay. So what happened? He could not read a book. So there was an assistant who always read book for him.
oh, he was just lying on the bed and someone was reading the book. Okay, this happens in his time. Okay, and he was just listening passively. So you should not be Akbar. Okay, you know how to read, you can solve questions. So better be involved and you can try solving that passage, right? Is that fine? Okay, see, let's say we'll see the first question. The king's bodyguard did so. Which of the following correctly explain? They snatched away the half-eaten ball. Okay, if you'll read the paragraph, you'll read the paragraph. Who can tell me where is the answer? The delighted king ordered his soldiers to bring a big garland made of very attractive looking and accented flowers and himself garlanded the physician. तो बॉडीगार्ड को उसने क्या कहा था कि एक अच्छा सा गार्लैंड लेके आने के लिए और अट्रैक्टिव राइट ये सुनो ये एक पहला लाइन था एंड देन व्हाट हैपेंड while the physician was about to offer the sweetmeat ball the court jester rushed forward picked up a ball and began eating it. Everyone was present in the court was astonished. Take hold of the mad chap, shouted the king. The king's bodyguard did so. Can you see this did so? The king's bodyguard did so. Okay. Take hold of the mad chap, shouted the king. Yes or no? So now tell me which is the option. So he asked to catch hold. उसने बोला कि इसे पकड़ लो, right? He asked to hold it. Catch hold मतलब उसको गिरफ्तार कर लेना या पकड़ लेना, right? So now tell me which option is right. They snatched away the. Option E. So this is not correct, right? They arrested the physician. No, because he like the jester eaten the ball, right? Yes or no? Physician तो बॉल लेके आया था उस हाफ इटन बॉल को जेस्टर ने खा लिया तो उसे पकड़ने के लिए किंग ने कहा राइट यस और नो द जेस्टर रस्ट फॉरवर्ड एंड पिक्ड अप द बॉल एंड बिगन ईटिंग इट तो जेस्टर ने खाना शुरू कर दिया था तो फिजिशियन को पकड़ने के लिए नहीं कहा दे स्नैच्ड अवे द प्लेट ऑफ बॉल नो दे टुक होल्ड ऑफ द फिजिशियन यस और नो they took hold of the physician ये भी सही है क्या they took hold of the physician No, no sir. they took hold of jester right and so there is no option mentioned here so which will be the correct answer None of these. none of these that is e yes or E. no so see this is a very simple passage and very simple uh, options right if you will see only thing you have to pay attention here then only you will be able to solve the passage is that fine can you see that Yes, sir. अब देखिए ध्यान से एक सिंपल सा पैसेज है आप डायरेक्टली आप लाइंस पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा ठीक है ओके गॉट द पॉइंट आप पैसेज को सिंपल पैसेज है आप समझ सकते हैं और जब आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो अब देखिए जिन भी बच्चों ने आंसर दिया उन्होंने बहुत हल्ड़बड़ी में या जिस भी तरीके से आंसर दिया वो गलत है राइट तो करेक्ट आंसर इज ई ठीक है यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि आप किसी वर्ड का मीनिंग नहीं जानते आप यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स दो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट ठीक है ठीक है नो आंसर्स sir you tell me I'm listening I'm very good listener whatever you will tell me I can understand I will not answer but you can say okay shall we go for the next question Yes, sir. according to the king's information which of the following was the invention of the physician ठीक है किंग के इंफॉर्मेशन के हिसाब से कौन सा जो जो भी नीचे दिए हुए ऑप्शन है उसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इन्वेंशन ऑफ द फिजिशियन फिजिशियन ने क्या इन्वेंट किया था कम ऑन एवरीवन ट्राई आंसरिंग इट come on you have to solve Option D. option you can type D. out B Bombay
No, sir. D. D, Delhi, right? Yes, sir. Super, great. Others also try solving it. Okay, so see here, we'll see the options. Okay, an edible substance that was very sweet. So if you'll read the passage properly, Vishwaditya, the king of Magad, heard that a great physician who lived in the neighboring kingdom had invented an edible magic substance which, if eaten with sweet meat, would give one long life, right? He invented the physician, though through his messenger. The physician arrived with four sweet meat ball mixed with the magic substance, right? So what it will give a what? Give one long life. आपको एक लंबी लाइफ मिलेगी, राइट? सो नाउ एन eatable substance that was very sweet. ये सही है क्या? Maybe it's sweet, but it is half of the information. A magic substance that would give strength. This is not correct, right? A magic substance that would reduce the lifespan. क्या वो लाइफ को कम करने वाला है? नहीं, it will give a long life. ये लाइफ को बढ़ाने वाला है, right? A substance that would postpone death. Yes. आपका डेथ नहीं होगा, वो पोस्टपोन हो जाएगा, मतलब आपको बहुत लंबी लाइफ होगी, आप मरेंगे नहीं. दैट कैन बी ऑप्शन. A substance that would make life miserable. तो दिस इज नॉट ऑप्शन. लाइफ मिजरेबल नहीं बनाने वाला है, राइट? सो दैट वाज वेरी स्वीट, ये भी एक ऑप्शन नहीं है. सो वी हैव ओनली लेफ्ट विथ ऑप्शन डी. तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर. Agree? Everyone agree? Anyone else? Yes, Anyone sir. having other option? Do you think there is another option with which we can go? No? No, sir. Good. So shall we go to the next question? Okay, next. Yes, sir. Which of the following statement is true in the context of the passage? यहाँ पे आप we have been given 5 sentences. What do you have to do? You have to choose which one is correct according to the passage. So you can just try solve it. Read. Everyone can see the screen comfortably. आपको question दिख रहे हैं, paragraph भी दिख रहा है. Yes? Yes, sir. Okay. So tell me which option is correct. The third question. Which of the following statement is true according to in the context of passage? Passage के context में मतलब passage के हिसाब से passage के अनुसार जो बाकी 5 sentences दिए हुए हैं उसमें से कौन सा सही है? Okay, so see, we'll be seeing the options. Okay, most of you are saying B as your answer. Let's see which is the answer. Okay. Okay. So the king was not moved by the jester's weeping. Okay. So this is an option. The king was not moved by jester's weeping. So here we can see the jester said tears. No use crying, said the king. Okay, no use crying, said the king. Directly, this first line is mentioned, right? मतलब what the meaning of this sentence is कि जो किंग है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा जेस्टर्स के रोने से. जेस्टर रो भी रहा है तो किंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट? दैट इज व्हाट मेंशन इन द पैराग्राफ. नो यूज क्राइंग, सेड द किंग. रोने का कोई फायदा नहीं है. तो हमारा पहला जो ऑप्शन है दैट द फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ इज करेक्ट. दो विल सी द अदर ऑप्शंस. ओके, लेट्स सी द अदर ऑप्शंस. ओके. The sweet meatball were having wonderful power. Do really it has a wonderful power?
ऐसा पता है सभी को, ऐसा लोगों को मालूम था, किंग को भी मालूम था, बट एग्जैक्टली क्या वंडरफुल पावर्स थे? सच में क्या वंडरफुल पावर था वो स्वीट मीट बॉल में? यस और नो? नो, इट इज That is not mentioned. सॉरी, That is not mentioned. that is not mentioned, like okay, the sweet meatball were having wonderful power, ये तो मेंशन नहीं है ना वंडरफुल पावर था या मतलब था, ऐसा ऐसा तो नहीं था, राइट? लाइक सी, इफ यू Yes, रीड sir. द पैराग्राफ, यहाँ पे समझ में आया ही रियलाइज हिज मिस्टेक ऑफ बिलीविंग इन सच मैजिक थिंग्स, मतलब ये उसका मिस्टेक था, उसने ऐसा बिलीव किया, इसका मतलब स्वीट मीट बॉल में कोई भी वंडरफुल पावर नहीं थे, राइट? यस और नो? ही सुटेबली ऑनर द जेस्टर, बाद में जेस्टर को पुरस्कार भी दिया गया, मतलब ऐसा नहीं था, वो गलत चीज थी, गलत परसेप्शन था, तो सेकंड ऑप्शन इज इटसेल्फ नॉट करेक्ट। इज इट फाइन? नेक्स्ट, द पनिशमेंट सेंटेंस्ड ऑन जेस्टर वाज इम्प्लीमेंटेड, क्या जो पनिशमेंट दिया गया था वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया? नहीं, सिर्फ पनिशमेंट दिया गया था बट इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, राइट? द फिजिशियन वाज वन ऑफ द किंग्स ओन सब्जेक्ट, द फिजिशियन वाज वन ऑफ द किंग्स ओन सब्जेक्ट, क्या फिजिशियन जो आया था वो किंग का अपना एक सब्जेक्ट था, बाकी लोगों को मतलब नहीं था? ऑफ कोर्स मतलब था, इट वाज प्रेजेंटेड इन द कोर्ट, एवरीवन वाज सीइंग इट, एंड इवन जेस्टर वाज गिविंग सजेशंस, द सोल्जर्स वर आस्क्ड टू arrested, no, to arrest someone, yes or no? So it's not his own subject. The king had realized his mistake even before the jester's act, क्या जेस्टर के कुछ भी एक्ट या जो भी उसने उसको खा लिया या ही स्टार्टेड सेइंग समथिंग बिफोर दैट, क्या किंग को रियलाइज था ये अपनी मिस्टेक के बारे में? ऑफ कोर्स नॉट, यस और नो? उसको बाद में जेस्टर के एक्शंस के बाद रियलाइज हुआ ऐसा, ठीक है? सो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट, दिस इज आल्सो, सो वी विल हैव ए एज आवर करेक्ट आंसर। इज दैट फाइन? Anyone is having any question regarding this? Come on, tell me. No? No, Shall, sir. shall we go to the next question? Yes, sir. Okay. So we'll see the next question now. When the physician visited the court, the king, जब physician court आया तो king ने क्या किया? The king get annoyed, was wearing a garland, become very happy, order him to garland his shoulder, uncover the plate of sweet meatballs. Which is the correct option? Okay. Do you want to try or I should explain directly the answers? Option C. Option C. Super. Very good, Archita. So let's see the option. So, like, see, in the passage directly mentioned, the he invited the physician through his messenger. The physician arrived with 4 sweet meatball mixed with the magic substance. The delighted king, matlab delighted means happy. The happy king ordered his soldiers to bring a big garland made of very attractive looking and scented flowers and himself garlanded the physician. उसने खुद से उसे माला पहनाया, give respect, given respect, right? So got annoyed, नहीं annoyed नहीं हुआ, he was happy. Was wearing a garland, no, he was not wearing, he garlanded the physician. Become very happy, एक ऑप्शन हो सकता है, राइट? Ordered him to garland his soldiers, क्या उसने ऑर्डर दिया था सोल्जर्स को? नहीं, उसने खुद ऑर्डर दिया था फ्लावर लाने के लिए, लेकिन गार्लैंड करने के लिए नहीं, उसने खुद गार्लैंड किया, राइट? Uncovered the plate of sweet meatballs, no, उसने उसे uncover नहीं किया, so he become very happy. So correct answer would be C. Is that fine for everyone? C would be our answer. Is that fine? So आप देख सकते हैं ये C जो है हमारा आंसर होगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो that is not relevant. Is it okay? Yes, sir. Good. So we'll go with the next question. Let's see, fifth question. According to the jester, what was the effect of eating of half a ball on him? तो जेस्टर के हिसाब से, राइट, उसके हिसाब से जब उसने आधा मीट वो ईटिंग हाफ अ बॉल, उसने बॉल का आधा जब खाया तो उसका इफेक्ट क्या हुआ उसके ऊपर? टीयर्स इन आईज, डेथ सेंटेंस, लॉन्गर लाइफ, बीइंग ऑनर्ड बाय द किंग, नन ऑफ दिस, क्या इफेक्ट हुआ जब उसने आधा बॉल खाया? उसके हिसाब से क्या ऑप्शन उसका रिजल्ट हुआ? व्हाट वाज द रिजल्ट आफ्टर ईटिंग हाफ अ बॉल?
Yes, and yes. Sorry. Okay, who all are saying B? Good, great, actually. So see, he was saying that I ate half the ball and I got death sentence, right? Here, how dare you touch the magic thing meant for me? Be ready to face the consequence, death. The jester said, tears, no use crying, said the king. I am crying for you, my lord, replied the jester. Why? Asked the king. My lord, by eating only half of the magic thing, I am going to die. So he got death sentence, right? आधा ही खाने से he got death sentence. So tears in eyes, no. Longer life, no. Okay. Being honored by the king, of course not. None of these. So you have option death sentence. So correct answer would be B. Is that fine for everyone? We'll see the next question now. Which of the following surprised the courtiers? जो कोर्ट में जितने लोग थे उन लोगों को किस चीज से सरप्राइज हुआ? The physician's wonderful invention, the king's unlimited joy at the sight of the plate, the jester's wisdom of exposing the physician, the king's reactions toward the jester, or the jester act of picking up and eating a sweet meatball. तो बाकी जो वहां पे कोर्ट में लोग प्रेजेंट थे, courtiers, किस चीज पे, which act or which action, by which action they were surprised? Someone tell me. Option E, sir. Option E, very good. Most of you are getting the point now. Okay. So correct answer would be E. So the justice act of picking up and eating half sweet meat ball. तो उसने अचानक से उसको पिक किया और आधी ये हाफ स्वीट मीट बॉल को खा लिया. So that surprised everyone. So correct answer would be E. Is that fine for everyone? Okay, next question. What made the jester weep with sorrow? ठीक है. जो जेस्टर थे उसे किस कारण उसे रोना पड़ा और दुख के साथ? व्हाट मेड द जेस्टर वीप विथ सॉरो? दुख के साथ रोना पड़ा क्यों? क्या चीज की वजह से? व्हाट मेड इट? So the death sentence passed on him by the king, his concern and anxiety for the life safety of the king, the effect of physician's invention on the lives of the people, the destruction of half sweet meatball, or none of this? Come on, tell me. Why he was crying? What he was telling everyone? So he said, I ate half of the ball and then I am going to die. What will happen with the king if he will eat it? So he was very much concerned and his anxiety for the safety of the king. So that is what his safety. Other options, uh, the death sentence passed on him by the king. इसकी वजह से वो रो नहीं रहा था, right? He said here, uh, can you see, my lord? I am crying for you. I am crying for you. He is not crying for himself. He said, I am crying for you, replied the jester. Why? Asked the king. My lord, by hitting half of the ball, magic ball, I am going to die. What will happen to you when you will eat the whole of the magic thing? Right? He was concerned about the king, right? Is that fine? So he's concerned about the uh, uh, concern and anxiety for life safety of the king. So the correct answer would be B. Okay, let's see the other question. Next question. The king offered death sentence on the jester because the jester had. तो jester ने क्या किया था? क्यों उसे death sentence दिया गया? Tried to teach the king a lesson, caught hold of the physician, insulted the physician by his impolite act, snatched away the thing which was meant for the king, touched the magic sweet meatball to remove its power. Which is the correct option? D, sir. Yes. D. Read it carefully. Anyone can answer. The correct answer would be D. Is that fine? This would be the correct answer. Next. Shall we go to the next question? Okay, everyone is okay with this? D would be the correct answer. Next question. He realized his mistake of believing in such magic thing. Which of the following explains such magic thing?
ओके, ही रियलाइज्ड, उसे रियलाइज हो गया इन सब चीज़ों पे बिलीव करने के लिए। तो व्हाट इज सच मैजिक थिंग? थिंग्स विच हैव मिराकुलस पावर, थिंग्स विच हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर prepared by famous physician, things said to possess magic power but do not have such power, things offered to king to help him live longer, or none of these. What is his mistake? C. C. Okay, Harshika, if you'll see it, things of said to possess magic power but do not have power. जो चीजें कही जाती है मैजिक पावर बट उसमें पावर नहीं होता, दैट इज व्हाट द मिस्टेक। किंग को लग रहा था ऐसा पावर है बट एक्चुअली ऐसे पावर्स नहीं होते, सो दैट इज व्हाट हिज मिस्टेक। इज दैट फाइन, हर्षिका? So the correct answer will Yes, be sir. C. So the correct answer will be C. Shall we go with the next question? The king honored the jester for his act of what? Opening the king's eye, committing a mistake, realizing that he was wrong, eating up half a sweet meatball, or believing in false things. किसके लिए उसे ऑनर किया गया? A. A. Okay, very good. The correct answer is A. So opening the king's eye. He helped to open to realize or to understand about the reality of that magic ball. Is that fine? Is that okay? Yes, sir. Okay. Sir, I have a doubt in this question. Just tell Sir, me. C realizing that he was wrong, that can't be correct Realizing, option, okay. sir. The king honors the jester for his act of realizing that he was wrong. See, जेस्टर्स के किस एक्ट के वजह से? तो जेस्टर ने रियलाइज नहीं किया, रियलाइज किंग ने किया, राइट? द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. Jester was knowing it. He knows that these are not correct. They don't have any magic power. So he just wanted to prove to the king, right? So he tried to convince the king, or actually he tried to open the king's eye, right? Yes or no? Who realized the mistake? King realized the mistake. Jester did not realize. Yes or no? So the question is कि किंग ने किस लिए उसे ऑनर किया, जेस्टर के किस एक्ट की वजह से, राइट? सो द क्वेश्चन इज व्हाई द किंग ऑनर्ड जेस्टर. What was the act of the jester for which the king has honored it? So he honored because he helped to open the king's eye. Is that fine? Yes, sir. Okay, so you can see this is a very simple passage. Saying we are just adding spices to it, right? हम अपने मन में कुछ और कुक कर रहे हैं, राइट? पैसेज कुछ और कर रहा है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू ऐड समथिंग, वी आर जस्ट गोइंग इमोशनल, और वी आर एडिंग आवर ओन इमोशंस टू द पैसेज, राइट? Yes or no? That's why we are making mistake. So you have to go directly through the passage, what exactly the passage is saying. Is it fine for everyone? Yes or no? Yes, sir. So can we solve another question? No? Yes, sir. Or shall we stop here? Okay, we'll see one more passage. Okay, simple, very simple passage. Is that fine? Yes, sir. Okay, so this is the very simple passage, very easy one. You will have only 5 questions based on this passage. So I want everyone you to solve this passage. Try doing it. So your time starts now. You can start reading the passage by yourself and then we'll solve the question. Try doing it.
Once you are done with the reading passage, then you can just give a thumbs up. So you can start with the questions. Okay, Akash, just wait for another 1 minute. Maybe others are reading the passage. Okay, Chita, will wait for another 1 minute. Okay, shall we start with the questions now? So first question we have is, Yes, which sir. of the following statement is true? Which of the following statement is true? Do read the options and then tell me what will be the correct answer. A. Okay, A. Others. So A, sir. everyone try doing it. See whether you are right or wrong. It's a different point. That's not important. You should try. That is very important, right? Because over the period of time, we'll correct our mistakes. Okay, so C, option A would be the correct answer. Which of the following statement is true? Goldfish should be given food only once a day. It's mentioned in the passage, right? Let's see where. Uh, okay. So which line says that? Let's see. Snails, large lake. It is important. Okay, see here. It is important that goldfish should not be overfed. They can be fed such things as dried insect in addition to commercially prepared goldfish food, but they should never be fed more than once a day, right? They should never be fed more than once a day. Okay, so first option, of course, is correct. Yes or no? Is it fine? Yes, sir. Let's see other option. Snails eat up the goldfish in an aquarium? No. Plants provide food to the snails? No. Goldfish come above the surface of water to get oxygen from the air? No. A larger take is an ideal place for, sorry, it's not take, it's lake. Okay. So a larger lake is an ideal place for goldfish. No, right? It can be kept anywhere. So the first option, option A is the right answer. Is that okay? Everyone agree? Yes, sir. Okay. Next question. Which of the following statement is not true? Do mind it. Not true. It's asking about not true. Okay, most of the time when we read such question, we in hurry burry we saw read it as which is true and then we make mistake. So you have to mind that this is asking about not true. Come on. A. Okay. Others. So see, snails make aquarium clean by eating up goldfish. Of course not. This is not nowhere mentioned about this. So this is incorrect. Okay, next. 2 gallons of water with sufficient oxygen is enough for 2-inch fish. Yes, this is mentioned.
Goldfish can be made good pets. Yes. Plants in an aquarium provide oxygen to goldfish. That is also right. Goldfish must never be given too much food. Yes, that is also mentioned. Should not be given overfed. We should not overfeed the goldfish. Okay. So correct answer would be A. Is that okay? Yes, sir. Good. Shall we go with the third question? Yes, sir. Okay. Which of the following help supply goldfish with oxygen? Snails, dried insect, plants, aquarium, surface of water. B. Option B, plants. Yes, sir. So you can clearly see this is mentioned in the passage. Okay. The plants in an aquarium. Sorry, plants in an aquarium also helps to furnish oxygen. Furnish means to supply oxygen. Okay. So the correct answer would be B. Is that okay? Yes, sir. Next question. Water in an aquarium needs to be changed if there are plenty of snails and plants in it, if there is no sufficient oxygen in it, it is very clean and contains sufficient oxygen, does not contain goldfish, food, and dried insect. None of this. Which one is correct? When it has to be changed, can you see? Come on. E. None of this. Yes, sir. But here, if you'll read, the snails helps to keep an aquarium clean. Then, thus, with plenty of plants and snail, the water in aquarium should does not have to be changed frequently, right? So plants supply no oxygen, and snail keep it clean. Yes or no? Plants supplies oxygen, and snail keep it clean. Yes or no? So with plenty of plants in snail, the water in aquarium does not have to be changed. अगर आप plant है और snails हैं तो पानी water change करने की जरूरत नहीं है. But water has to be changed कब? अगर there is no sufficient oxygen, then it has to be changed, right? So why not option B? We can go with B. Is that okay? No. Sir, it is because the air that is present on the water surface, it touches it, so there would be, subsequent supply of oxygen. So I think the oxygen की कमी नहीं होगी maybe. यस यू आर राइट आई एग्री कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी राइट बट पानी कब चेंज करना है लेट्स से व्हाट व्हेन वी हैव टू चेंज द वाटर व्हेन देयर इज no sufficient oxygen, let's say whatever ways, maybe there is plants or maybe there is contact from the surface, but those two things is not happening, then we have to change, then we have to change water. Yeah, but the option could be none of these also, right? In my opinion. Okay, see that way we can think, but see, water in an aquarium needs to be changed. The question itself is saying कि change कब करना है. So none of these I think that is not more suitable, right? पानी कब change करना है, right? When we have to change the water, when there is no sufficient oxygen, then we have to change. Whatever ways it's getting less oxygen, reason जो भी हो कि oxygen किस वजह से नहीं आ रहा है, but the thing is when we have to change the water when there is no sufficient oxygen. Yes or no? So basically, I am just getting your point. What you exactly understanding from the passage. But see, out of 4 or 5 options, which is more appropriate or which is best suited? Was B. So B should be the correct answer. Is that okay? Yeah. So we have the last question from this passage.
So this one is, come on, try solving it. What is important to remember when feeding goldfish? Come on, everyone. D, sir. Okay, D. So let's see. They should be feed more than once. No, they've clearly mentioned here. Uh, they should never be fed more than a day, once a day. तो एक बार से ज़्यादा आप उसको नहीं खिला सकते, right? So this option is incorrect. They should be fed at 5 minutes interval, of course not. They should be fed with plants and ants, snails. Uh, उसको plants और animals के साथ fed करना सही रहेगा? नहीं, that is also not right. Yes or no? Correct? Is that okay? So that is also not correct. So they should be fed only once a day. Of course, right? This is fine. So the other options are incorrect. So the correct answer will be D. Is that okay? Is it okay? Yes, sir. Okay. So we'll stop here. Okay. Are you okay with the passage? So see the passages which we have solved. So the meaning of those passages you already know. Okay. Good evening, Amarjeet. Uh, like what we have to, just we have to pay attention, then we'll be able to solve the passage. Yes or no? So from last two passages we learned only the thing is that we have to pay attention, then only we can solve the passage. Yes or no? There were no difficult words, no such jargons, no such statement in which the meaning of the words we are not aware, but we made mistakes. Yes or no? So if you read the lines carefully, we can solve it. Is that okay? That is what the takeaway from today's class. Is that okay? Yes. Okay. Any other question? If you have any other question, please ask me, or else you can disconnect. Thank you so much for today's class. Or if let's say if you have any suggestion, you can tell me. Like while conducting the class, if you are facing any problem or something has to be improved, please do let me know, or else we can disconnect. Thank you. Thank you so much. If you don't have any question, you can disconnect. We'll meet in the next class. Thank you, sir. Thank you, Arshika. Thank you, Thank you, everyone. sir. Thank you, Arshika. Mega, yes, that will be arranged. If you miss the live class, maybe recorded video of the class will be provided. Okay, so shall we conclude the class here?